थंबनेल की इमेज देखी आपने, बट वो फेक नहीं है। आप भी ऐसी फ़ोटो ले सकते हो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के साथ। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। मुझे पर्सनली म्यूज़ियम जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड यू गाइज हैव सीन हाउ मेनी म्यूज़ियम्स आई हैव विजिटेड इन द लास्ट 5 years। बहुत सारी जगहों पे मैंने व्लॉग भी किया है, और ऐसे ही एक म्यूज़ियम में मैं आज पहुंची हूँ। दिस इज़ द प्राइम मिनिस्टर म्यूज़ियम, which is located in Delhi. This place opened for public on 14th April 2022. This museum is basically a tribute by our nation to all the prime ministers we had so far. Their contribution to our country. हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स रह चुके हैं, उनकी लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको इस म्यूज़ियम में देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन the sad part is कैमरा इज़ नॉट अलाउड इनसाइड द म्यूज़ियम, एज इन बहुत सारे पार्ट्स में म्यूज़ियम के। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को जितनी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ वो मैं दूँ। Let's go inside the museum and see what we can find here. And कैमरा क्योंकि अलाउड नहीं है तो बहुत लिमिटेड चीज़ मैं शूट कर पाऊँगी, but still let me give it a try. So right at the entrance you will find this dummy of this museum, और यहाँ पे there is this building. It was made in the year 1913. Was elected to draft the Constitution of India. Following India's independence, the members of the Constituent Assembly served as the nation's first parliament. So once you enter this museum, you have so many different sections to visit. All together यहाँ पे 2 से 2.5 घंटे का टाइम लगेगा अगर आपको म्यूज़ियम का हर एक पार्ट एक्सप्लोर करना है तो। अभी मैं ये डेमोक्रेटिक इंडिया वाले सेक्शन में हूँ। यहाँ पे अंदर यू कैन सी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। If you want to read it, you can read it in different languages, Hindi, Kannada, Konkani, Constitution of India as on 14 January 2019. A rare hardbound copy of the original handwritten and illustrated Constitution of India on display here. Reflected Pandit Nehru's claim that we are not just caretakers for a brief period. ये म्यूज़ियम के टॉप वाले सेक्शन का एरिया, और यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू की सारी चीज़ें रखी हुई है। एंड दिस इज़ एक्चुअली द बिल्डिंग वेयर पंडित जवाहरलाल नेहरू, आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, यूज्ड टू लिव। एंड हियर ऑन द डिस्प्ले यू कैन सी clothing items worn by Shri Jawaharlal Nehru, and this is his clothes with this rose. I feel this rose is made of plastic, so I cannot say if it's a genuine one, but the cap and the gloves are real. Trust me when I say this, it's a place you must visit. डॉक्टर भाभा ने भारत का अद्वितीय त्रिचरणीय भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम तैयार, क्योंकि भारत पूरी तरह से स्वदेशी परमाणु कार्यक्रम के साथ आत्मनिर्भरता की सीढ़ी चढ़ा।
ऐसे स्क्रीन पे ना ये सारी चीज़ें देखना, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम. लाइक वी हैव वॉच्ड इट इन द मूवीज़, देयर आर सो मैनी मूवीज़ मेड बेस्ड ऑन पार्टीशन ऑफ इंडिया, बट इस म्यूज़ियम में what you see on the screen is the real thing. It's all archive videos and photographs. This is the room where our first Prime Minister Jawaharlal Nehru has taken his last breath. You can see the bed there, and this section has the couches, and on the door it's written he died in this room. So that's what I say about the museums, because museum connects us to our past. It's basically a place which I would like to call keeper of the history. So anything which we have not seen and only heard of in our books, in schools, museums give us that part. ये वाला जो room है, it's called बैठक sitting room, and right in front of that you have this study room of PM Nehru. मैं यहाँ से बाहर निकलूँ ना, मुझे रिस्पेक्ट देना, बहुत कम लोगों को ये चांस मिलता है. प्राइम मिनिस्टर मोदी जी. Got the letter. It says, "Dear Priyanka, we should remain students for lifetime. You should be ready and yearn to learn from every moment of life. Narendra Modi ji." So guys, this was all from Prime Minister Museum in Delhi, and I totally recommend you all to come to this place. The reason, यहाँ पे आपको जो इंडिया के अब तक के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स रह चुके हैं, 14 प्राइम मिनिस्टर्स, उनकी लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी. सैडली कैमरा इज़ नॉट अलाउड एट एवरी प्लेस इनसाइड द म्यूज़ियम, विच मेक्स सेंस, क्योंकि म्यूज़ियम के अंदर मोस्टली कैमरा, वीडियो कैमरा अलाउड नहीं होता है. तो 90% ऑफ द थिंग्स आई कुड नॉट शूट. But that makes sense, because if I'm not showing it here and telling you guys to come over, then do come over, because this place is really nice. And क्योंकि ये दिल्ली में है तो आप easily यहाँ पे आ सकते हो. There is an entry ticket of 50 रुपीज़ समथिंग, और जो भी एक्टिविटीज़ आप करते हो उसके लिए 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा होता है पर एक्टिविटी. फ़ोन आप लेके आ सकते हो अंदर, बट वीडियो कैमरा लाइक DSLR नॉट अलाउड हियर. एंड देयर इज़ अ कैंटीन, सो यू कैन ईजिली ईट एट द कैंटीन अगर आप चलते चलते थक जाओ तो. नियरेस्ट मेट्रो इज़ लोक कल्याण मार्ग, LK मार्ग. डायरेक्ट मेट्रो है, येलो लाइन से आप आ सकते हो. बेसिक थिंग्स, म्यूज़ियम संडे को बंद रहता है, तो आप संडे को यहाँ पे मत आना. टाइमिंग जो है सुबह के 10 बजे से शुरू होता है कुछ, और शाम के 5 बजे तक है. 6 से 7 लाइट शो होती है, लाइटिंग शो, बट वो आप रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो. यू कैन बुक द टिकट इधर ऑनलाइन और ऑफलाइन. ऑफलाइन आप यहाँ पे आके ही बुक कर सकते हो, और ऑनलाइन भी आप वेबसाइट पे चेक कर लेना. आई विल पुट द डिटेल्स इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन बिलो. आई होप यू गाइज एन्जॉयड वॉचिंग दिस छोटा सा व्लॉग ऑन माई चैनल फ्रॉम Delhi after so long. I'll see you guys in the next episode. Like, comment, share and subscribe.